हेलो एवरीवन, सो स्वागत है आपका लेक्चर 12 ऑफ द मैथ सीरीज़ में। शुरू करते हैं GS1 से। GS1 का क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड एग्जामिन हाउ इट हैज़ इफेक्टेड द सोसाइटी एंड द पॉलिटी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. So, what is identity politics? It refers to the tendency of people, ठीक है, of a particular religion, race, social background to form exclusive political alliances. तो जब political alliances are derived from identity, और वो identity religion से हो सकती है, derive race या social background से, so that is what is known as identity politics. It has been a part of modern Indian history, right from Muslim League to Hindu Mahasabha in the pre-independent India to ethnic-centric regional political parties of modern times. So next is what is the effect. तो अगर हम कुछ positive की बात करें तो हाँ, one party dominance को ज़रूर break किया था. Break away from one party dominance for the first three elections to multi-party coalition governments post 1991. इससे क्या होता है कि जो पहले सेक्शंस डिप्राइव्ड थे उनको भी एक तरह से वॉइस मिली. Next, rise of regional and state parties like BSP, SP in UP, RJD in Bihar, etc. And then prominence of lower caste on the political stage of India. So these are some of the positive points, but काफ़ी ज़्यादा negative भी हैं. क्या पहले तो resentment है amongst the politically left out and less represented sections like women. देन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मोनोपोलाइजेशन हो रही है इन स्टेट्स ऑन द एथनिक बेसिस एंड टेंडेंसी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू स्वे पीपल ऑन द बेसिस ऑफ नैरो इशूज ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन एट्सेट्रा. तो जो रियल इशू होना चाहिए वो डेवलपमेंट का होना चाहिए, इंक्लूसिवनेस का होना चाहिए, ना कि आइडेंटिटी का. एंड वी आर नॉट एक्चुअली गिविंग tickets to the candidates on the basis of, let's say, their merit. We are giving it on the basis of religion or language or their region. And also there is monopolization of the resource distribution. तो हमारी जो proper development है वो नहीं हो पा रही है. ठीक है. एंड येस, देन अगेन कास्ट पॉलिटिक्स इज ऑन द राइज. वी हैव पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एज वेल एज कास्टिसाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स. कोटा पॉलिटिक्स इज ऑन द राइज, वोट बैंक पॉलिटिक्स इज ऑन द राइज. ठीक है. एंड कोर इश्यूज हैं जैसे कि जो डेवलपमेंट ग्रोथ से रिलेटेड कि मॉडर्न इंफ्रा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, उनका टोटल निग्लेक्ट हो रहा है आजकल. ठीक है. सो वी हैव लो लेवल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन विच इज नॉट ओनली इफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट बट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. And then poor state of law and order and discriminatory treatment is based on ethnicity is still a part of our country. Rise in vote bank politics, yes, ठीक है. Then election of the candidates is not on the basis of the work, merit of his her work, but on the basis of ethnicity or a particular identity he or she holds. Then so how will you conclude it? So we will say that we have to have proper checks and balances in place to ensure the representation of diversity in democracy without compromising the political ethics. कि yes we need. So conclusion में आप ये भी एक बात कह सकते हो कि identity per se is not a bad thing, but yes, using that identity for vested interest and ignoring or neglecting the development of that is a crime. ठीक है, is a crime. It is actually a crime against the democracy. ठीक है. So next is GS2. So GS2 is a question on the political funding. It is argued that political funding is the nodal center of unaccounted and illicit money transfers and is the primary cause of corruption of the body politic. Do you agree? ठीक है. And next, discuss the short term and the long term solutions to address this problem. So political funding is considered to be one of the important sources of unaccounted black money generation and utilization. So we have the following reasons. First is, yes, we have unaccounted money because the money comes from anonymous sources. See, we don't know whether that is black money or white money.
देन क्रोनी कैपिटलिज्म. सी क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है कि जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो फंड करते हैं पार्टीज़ को ये सोच के कि जब वो पार्टी पावर में आ जाएगी तो उनके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा. सो इसमें जो पार्टी के फंड्स होते हैं वो मोस्टली ब्लैक मनी जनरेशन के ही होते हैं. ठीक है. सो द कॉरपोरेट्स दे ट्राई टू सीक बेनिफिट्स फ्रॉम पार्टीज इन टर्म्स ऑफ फेवर्स इन वेरियस गवर्नमेंट टेंडर्स एंड प्रोजेक्ट्स. So they fund the political parties. So it actually increases the nexus of corruption in the funding spectrum. And also political funding attracts huge amount of donations from across the sectors of economy including the corporate sector. Next is patronage system of funding कि जो MLAs हैं जो elect हो जाते हैं, so they ट्राई टू सीक मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज, है ना. तो क्या होता है कि पार्टी को एक तरह से ल्योर करते हैं विद वेरियस ऑफर्स और इंसेंटिव्स, और ये जो पैसा होता है मोस्टली ब्लैक मनी का ही होता है. एंड देन देर आर सम फेक पॉलिटिकल पार्टीज जिनको इलेक्शन लड़ना नहीं होता है, बट दे आर जस्ट देयर टू कन्वर्ट देयर मनी, देयर ब्लैक मनी इनटू वाइट. सो व्हाट आर द शॉर्ट टर्म मेजर्स? RTI, bringing the political parties under the ambit of RTI will increase their transparency and accountability. So it will actually reduce the scope of corruption. Then citizens, they should be aware. ठीक है. So they should actually vote on merit, ठीक है, rather than the campaigns and the identity. Then पॉलिटिकल इंटेंट भी होना चाहिए. ठीक है. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे शुड ऑल्सो बी हैविंग दिस इंटेंशन कि उन्हें रिफॉर्म करना है इस पॉलिटिकल सिस्टम को. एंड देन वी हैव लिमिटिंग द अमाउंट विच इज स्पेंड पर इलेक्शन पर कैंडिडेट. तो एक अगर लिमिट ही सेट हो गई तो ज़्यादा पैसे का वो करेंगे क्या. ठीक है. और हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंडिपेंडेंट ऑडिट भी होना चाहिए. नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म मेजर्स में पार्टी रिफॉर्म्स. ठीक है. इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि जो मेरिटोक्रेसी है वो राइज हो. ठीक है. रादर देन हम कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे कौन कितना पैसा लगा रहा है, मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे कैंडिडेट को ऊपर आना चाहिए. देन इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में ECI को ज़्यादा पावर्स देनी चाहिए ताकि वो इनिशिएट और पनिश कर सके इलेक्टोरल ऑफेंसेस के जो भी ऑफेंडर्स हैं, स्पेशली इफ़ रिलेटेड टू दिस मनी थिंग. एंड इट शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय स्ट्रिक्ट implementation of model code of conduct and representation of people act. Then state funding of elections should be there and there should be simultaneous elections. अब ये दोनों ना आपस में क्वेश्चन है कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए या वो कैसे कर्ब करेगी करप्शन को, और साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फ़ायदे और नुकसान. ठीक है. सो ये दोनों भी आप प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए जो स्पेशली इस बार मेंस लिख रहे हैं. ठीक है. सो स्टेट फंडिंग एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर ऑल्सो लॉन्ग टर्म मेजर्स. ठीक है. एंड देन डिजिटल ट्रांजैक्शंस. ठीक है. सिंस हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली बिल्ड करके डिजिटल ट्रांजैक्शंस ही होनी चाहिए. एंड so how will you conclude it? We will conclude it that it can never end. The corruption, it can never end unless greed of the people ends. ठीक है. So once the political parties they start giving tickets on the basis of the work, on the basis of the merit, है ना, and the work they did for the society and for the party and not on whether they can afford it, corruption in political funding is difficult to go. So obviously to end this corruption, है ना, in political funding, each and every stakeholder has to contribute, be it the government, be it the political parties, be it the citizens, be it the institutions and the police and the judiciary. Everyone has to reform. ठीक है. Next is GS3. So GS3 is the question is based on the aquaculture. The question is, while discussing aquaculture's potential in India, discuss the problems that the aquaculture faces and the possible solutions. तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले हम aquaculture बताएंगे क्या होता है. Aquaculture is the farming of the fish, crustaceans, mollusks, aquatic plants, algae and other aquatic organisms. It is an important and flourishing sector in India. So what is the potential? Potential क्या है? प्रोटीन बेस्ड डाइट का सोर्स है. ठीक है. इंडिया में आपने देखा होगा प्रोटीन, एनर्जी, मैल न्यूट्रिशन से काफ़ी ज़्यादा बच्चे स्पेशली अंडर 5 years of age they are affected. So we need more sources of proteins in our diet and they can actually serve to be a good source of protein. Next, geographical potential of the country is immense क्योंकि हमारे पास peninsular rivers हैं, we have perennial rivers. ठीक है. We have water bodies, we have seas surrounding the peninsular India. Then domestic demand is there. Not only domestic, we have foreign demand that can actually earn us a lot of foreign exchange when we will actually export these products. Then they provide employment to
वास्ट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर. अभी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर भी रहे हैं मिलियंस ऑफ पीपल को, एंड वंस द सेक्टर इज इवन मोर डेवलप्ड इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू इवन मोर पीपल. देन एग्रीकल्चर की जो अंडर परफॉर्मेंस है दैट कैन बी कर्ब्ड अगर हम एक्वाकल्चर को इम्पेटस दे, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी दे प्रोवाइड इनपुट्स. ठीक है, सो दे हैव अ ह्यूज पोटेंशियल. देन नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम्स. सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है, और अनरेगुलेटेड फिशिंग की वजह से अनसस्टेनेबल फिशिंग होती है. या इन आवर कंट्री वी हैव अनसस्टेनेबल अनरेगुलेटेड फिशिंग प्रैक्टिसेस, सो दैट इज वन प्रॉब्लम. अदर प्रॉब्लम इज वाटर पोल्यूशन. ठीक है, देन वी हैव ऑल्सो द यूज ऑफ ट्रॉलर्स. ठीक है, वो भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मेकिंग फिशिंग अनसस्टेनेबल. ठीक है, फिर फर्टिलाइजर्स harmful for the aquaculture growth. ठीक है, even the antibiotics are harmful for the aquaculture growth. Then next, loss of biodiversity because adverse climate change. ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है जो कि सारी दुनिया की ही प्रॉब्लम है. नेक्स्ट, इंडिया में वी डू नॉट हैव प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज इंफ्रा. ठीक है, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रा नहीं है. ठीक है, सप्लाई चेन इज नॉट प्रॉपर. And then since aquaculture produces perishable products, so we need a proper supply chain and we need a cold storage infra. Then India is yet to realize the potential of deep sea fishing. इसके लिए हमारे पास मीना कुमारी recommendations भी थी. You actually please do read them. They came in 2014. ठीक है. Then most importantly, security of the fishermen, especially along the maritime boundaries with Sri Lanka and Pakistan, also remain a concern. So that is also a problem of aquaculture only. देन वे अहेड क्या है, मपेडा. मपेडा को डेवलप करो. मपेडा क्या है, मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ द मेरीन प्रोडक्ट्स. तो इसको डेवलप करो. ठीक है, इसको ज़्यादा जिसे कहते हैं फंड्स और फंक्शनरीज वगैरह दो ताकि ये और डेवलप कर सके ना, एक तो इंडिया में भी और एक्सपोर्ट्स भी हमारे प्रमोट हों. ठीक है, सो वी नीड टू डेवलप मपेडा मोर, गिव मोर मनी टू मपेडा. Then again I talked about Meena Kumari recommendations, they should be followed, and that is mainly for deep fisheries. Then sustainable fishing should be there. Then wild fish harvest में precautionary approach should be followed. And yes, you need to use a lot of technology, a lot of let's say remote sensing satellites should be used, and GPS should be used. Then foreign players, ठीक है, can be allowed to fish in the EEZ, or you can also promote FDI in the fisheries area. Then we need blue revolution on the lines of the white revolution. So we need to transform the fisheries and the aquaculture sector with increased investment, better training and the development of infrastructure. ठीक है, so let's move to GS4 question. So GS4 question क्या है, we are witnessing increasing instances of sexual violence against women in the country. Despite existing legal provisions against it, the number of such incidences is on the rise. So suggest some innovative measures to tackle this menace. So it is a previous year ethics question, UPSC में आया हुआ question है ये. So let's see. So increasing the number of incidences of sexual violence is due to inbuilt patriarchal attitude of the society, and it is also manifested itself in the urban areas in seeing working women as of lower moral character and hence objectifying them. So some measures which can actually tackle this menace are strict implementation of Vishaka guidelines by SC for countering sexual harassment at workplaces. ठीक है, so जब भी sexual harassment at workplace की बात आती है, we have to mention the Vishaka guidelines which were given by the Supreme Court. So they have to be implemented, and they have to be implemented in a stringent way. Then violence against women also manifests due to unhelpful attitude towards women complaints. ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव अ वुमेन कॉप इन ईच पुलिस स्टेशन, एंड वी कैन हैव वन कंप्लीट पुलिस स्टेशन इन ईच सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट. सो ये भी किया जा सकता है. नेक्स्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए जाए कि आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन के साथ एक्सक्लूसिवली, जो कोर्ट्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन के साथ एक्सक्लूसिवली डील करें.
एंड देन स्पीडी जस्टिस शुड बी इंश्योर, ताकि ना वो एक प्रेसिडेंट एक्ट करे कि दूसरे लोग भी ना करें, ठीक है, क्योंकि अभी तो लिटिगेशन में ही उलझे रह जाते हैं, साल दर साल लिटिगेशन उलझे रहते हैं लोग, स्पेशली जो विक्टिम्स हैं उनकी हरासमेंट अलग से होती है, सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए ताकि स्पीडी जस्टिस हो, एंड इफ दे कैन बी मेड एक्सक्लूसिवली फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, नथिंग लाइक इट, ठीक है। Then each girl child should be given compulsory training in fighting skills at school level. Then use of technology like CCTVs at public places can also act as a deterrent. जैसे कि हम कहते हैं ना पार्किंग स्पेसेस में जो पार्किंग स्पेसेस हैं, ठीक है, वहाँ पे CCTVs लगा दिए जाएं, एंड दे शुड बी प्रॉपरली लिट, है ना, जो पब्लिक पार्किंग स्पेसेस है प्रॉपरली लिट हों, क्योंकि डार्क प्लेसेस में भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन दे आर ऑन द राइज, ठीक है। Then social policing can be an effective measure to bring down such crimes. And awareness should be generated through seminars, advertisement campaigns from bringing gender equality and changing the patriarchal mindset. So we can have awareness. So focus should be on to minimize the structural violence against females, such as less care for female infants, ठीक है, leading to increased mortality and steps to increase female literacy rate. तो यहाँ से अगर प्रोसेस शुरू हो जाता है कि बचपन से ही जो फीमेल्स हैं दे आर बीइंग, उनके साथ डिफरेंसेस होते हैं कि जो मेल चाइल्ड है उसको अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन, है ना, सब कुछ मिलता है, तो वो जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है उसके ऊपर भी हमें काम करना है। बाकी सारी चीज़ें कम्युनिटी अवेयरनेस, सोशल पुलिसिंग तो बाद में आते हैं। Hence, to tackle this menace completely, a comprehensive strategy involving both traditional and innovative measures should be adopted. ठीक है, so that's all for today. Thank you so much.